One ubiquitous, adjective. हाजिर व नाजिर, एक वक्त पर हर जगह मौजूद. Present, appearing, or found everywhere. To awry, adjective. गलत, तिरछा. Away from the usual or expected course, amiss. 3. Conspicuous, adjective. नुमाया, वाजे, खुलम खुला. Clearly visible. 4. Avaricious, adjective. लालची. Having or showing an extreme greed for wealth or material gain. 5. Degenerate, verb. तनज़्ज़ुली, खराब होना, बिगड़ना. Decline or deteriorate physically, mentally, or morally. 6. Plight, noun. खतरनाक सूरत हाल, बुरी हालत, कॉल देना. A dangerous, difficult, or otherwise unfortunate situation. 7. Dwindle, verb. सुकड़ना, घटना. Diminish gradually in size, amount, or strength. 8. Dictum, noun. कॉल, दावा, रस्मी ऐलान. A formal pronouncement from an authoritative source. 9. Abiding, adjective. पायदार, बाकी रहना. Of a feeling or memory, lasting a long time, enduring. 10. Fanatical, adjective. कट्टर, जुनूनी. Filled with excessive and single-minded zeal. 11. Spew, verb. थूकना, उगलना, कह करना. Expel large quantities of something, rapidly and forcibly. 12. Impoverished, adjective. मुफलिस, हाजतमंद, कंगाल. Of a person or area, made poor. 13. Predatory, adjective. शिकार खेलना, शिकारी, लुटेरा, गारतगिर. Of an animal, preying naturally on others. Elite bashing is Pakistan's newest sport. As the country stares into the default abyss, the ubiquitous phrase, elite state capture, putatively explains all that has gone awry. Fat cats are blamed for stealing public resources, conspicuous consumption, and dollar flight. But this super-simplified, sophomoric reasoning misses the real point. Doesn't every country have its ultra-rich? Are they less greedy, avaricious, exploitative, and degenerate? Wealth and privilege in America, Europe, China, Russia, and India are still more concentrated than here. But mafias and Silovikis notwithstanding, their knowledge-based economies keep soaring and their spacecraft are circling the moon and Mars. Our elite versus theirs, something truly sets us apart. Beaming a spotlight onto this is useful because it reveals actual differences between societies. Every elite mirrors what lies below. Look at Pakistan's homegrown elite. Like the common man, they spit on the law. Last week, when Britain's Prime Minister was hauled up for not wearing a seatbelt, he meekly apologized and paid the fine. Compare, an anti-terrorism court judge reportedly had 2 patrolling officers suspended for preventing his travel on the thickly fogged-up Sialkot motorway. Or, when an MPA's SUV zipped through a red light and crushed a policeman in Quetta, the MPA's political might ended the matter after the family was paid token compensation. Pakistan's plight isn't solely because its elite are corrupt, their values and worldview have failed. As in some African countries, Pakistan is home to the world's richest politicians, real estate tycoons, and generals. Symbiotically bound together, on Fridays they love being seen in a state of unctuous piety. Donning a prayer cap and dressed in starchy white shalwar kameez, one by one they step out from their shiny new SUVs and into a DHA mosque. In cultured societies, elites take delight in scientific and academic matters. They endow universities with chairs and professorships. Institutions bearing their names immortalize the donor. Named after J.R.D. Tata, the Tata Institute of Fundamental Research is the proud flagship of Indian science. But you can fruitlessly scour all of Pakistan for someone who will donate for science or the arts. As for music,
famed Pakistani ghazal singers like the late Mehdi Hasan and Ghulam Ali received more appreciation in India than Pakistan. Philanthropy in Pakistan means donating to madrasas, mosques, and hospitals. Instead of blasting away with a shotgun, let's understand that all rich people are not rich for the same reasons. Some are rich because of brainpower and hard work. Others are rich because they are thugs, land grabbers, manipulators, and rent seekers. Forbes, 2023, identifies the 5 richest Americans: Jeff Bezos, Amazon, Elon Musk, Tesla, Bill Gates, Microsoft, Larry Ellison, Oracle, and Mark Zuckerberg, Meta. Their creations have altered your lifestyle and mine. While rich Indians are not highly innovative, they too are quite technological. Forbes identifies the 5 richest as Gautam Adani, power generation; Mukesh Ambani, petrochemicals; Shiv Nadar, IT; Cyrus Poonawalla, vaccines; and Radhakshan Damani, retail. No wealthy Pakistani with businesses in the country has made it to the Forbes list, but reportedly the 5 richest are Mian Manshaw, Sadruddin Hashwani, Asif Ali Zardari, Malik Riaz, and Habibullah Khan. How they made their billions is not for me to know. But what exportables have they produced? Will Pakistan forever rely on bedlinen, underwear, and footballs to earn dollars? As forex reserves dwindle, one hears the dictum import less and export more. This is a no-brainer that macroeconomic jugglery cannot fix. Between PDM and PTI's approaches, the choice is of Tweedledum versus Tweedledee. Sociologists from the time of Max Weber have established that wealth production correlates directly with values, culture, and worldview. Clearly, significant change in Pakistan has to be generational. A culture of honest hard work, high-level skills, or a law-abiding citizenry cannot be created with a finger snap. What kind of attitudinal, cultural, and ideological changes are needed? First, stop force-feeding nonsense to our schoolchildren. What goes under education is actually religious and propagandistic indoctrination. The result is mass stupidity and Somalia-level learning outcomes. Don't blame the government alone, all of society is at fault. With a handful of exceptions, our universities are trash. Half of fully tenured professors are fit only for driving taxis. In such intellectual deserts, students demand only grades and degrees. Most vice-chancellors, deans and chairpersons would, at best, count among the semi-educated elsewhere. Second, stop blaming the world for Pakistan's problems. You cannot hate the West and, in the same breath, supplicate it for bailouts or apply for immigration. We are authors of our own misfortune. Without Pakistan's help, the Taliban monster and terrorism wouldn't have existed. It's true we were misused by Americans in warring with the Soviet Union. But didn't we milk the American cow until its udders ran dry of dollars? Who created the vast countrywide network of jihadist organizations aimed at installing fanatical forces in Kabul and liberating Kashmir? But for FATF, Hafiz Saeed would still be strutting around Pakistan instead of cooling his heels in prison. Climate change, of course, is not our fault. Others spew CO2, but impoverished Sindhi and Baloch peasants pay the price. Pretending to speak for them, our predatory political elite celebrate an anticipated bonanza. Their diplomatic blitzkrieg at COP27 procured billion-dollar pledges from a guilt-ridden West. But who will benefit from climate reparations? Before, during, and after the floods, thousands of luxury SUVs were imported. While the UK government has a carpool of 45 for all ministries and departments, Sindh alone has around 25,000 official vehicles with generous petrol quotas. Third, stop being a security state. Pakistan is chronically unable to live peacefully with its neighbors as well as with itself. This is unsurprising. In the 1990s, the federal national curriculum required 6th-class children to know about India's evil designs against Pakistan and to make speeches on jihad and shahadat. Why the murderous TTP is so attractive to large swathes of Pakistanis is not hard to see. Note how quiet the loch is these days and the unusually low level of vitriol from Indian leaders.
From their point of view, why spoil the fun? Just wait and watch as the unforgiving, immoral law of gravity asserts itself. Pakistan doesn't need an external enemy for collapse. Its civil and military elites have hollowed out their own house. The writer is an Islamabad-based physicist and writer. Published in Dawn, January 28, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. इलियट बिशिंग पाकिस्तान का जदीद तरीन खेल है। जब मुल्क पहले से तयशुदा खाई की तरफ देख रहा है, तो हर जगह मौजूद फिक्रा अशराफिया रियासत पर कब्जा इन तमाम चीज़ों की वजाहत करता है जो गलत हो चुके। मोटी बिल्लियों को अवामी वसाइल, वाज़े खपत और डॉलर की उड़ान चोरी करने का जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन यह इंतहाई सादा, सॉफ्टवर्क इस्तेदलाल असल नुक्ते को नज़रअंदाज कर देता है। क्या हर मुल्क में अपने इंतहाई अमीर नहीं होते? क्या वो कम लालची, बेहिस, इस्तेहसाली और ज़वाल पजीर हैं? अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस और हिंदुस्तान में दौलत और इस्तेहकाक अब भी यहाँ से ज़्यादा मरकूज हैं। लेकिन माफियाजे और सिलोविकियों के बावजूद उनकी इल्म पर मबनी मईशतें उरूज पर हैं और उनके खलाई जहाज चांद और मरीख के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। हमारी अशराफिया बमुकाबला उनकी अशराफिया कोई चीज़ हमें वाकई अलग करती है। इस पर रोशनी डालना मुफीद है क्योंकि ये मुआशरों के माबैन हकीकी इख्तिलाफात को जाहिर करता है। हर अशराफिया नीचे क्या है इसका आईनादार है। पाकिस्तान की मकामी अशराफिया को ही देख लीजिए। आम आदमी की तरह वो भी कानून पर थूकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जब बरतानिया के वज़ीर आज़म को सीट बेल्ट न पहनने पर पकड़ा गया तो उन्होंने नरमी से मुआफ़ी मांगी और जुर्माना अदा किया। मिसाल के तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के एक जज ने सियालकोट मोटरवे पर सफ़र रोकने पर 2 पेट्रोलिंग अफसरान को मुअत्तल कर दिया। अब फिर जब क्वेटा में एक MPA की SUV ने रेड लाइट के जरिए एक पुलिस एहलकार को कुचल दिया तो MPA की सियासी ताकत ने अहलखाना को अलामती मुआवजा अदा करने के बाद मामला ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान की बदहाली सिर्फ इस वजह से नहीं है कि इसकी अशराफिया बदउनवान है। इनकी अक़दार और आलमी नुक्ता नज़र नाकाम हो चुके हैं। बाज़ अफ्रीकी ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी दुनिया के अमीर तरीन सियासतदान, रियल एस्टेट टाइकून और जर्नल रहते हैं। बाहमी तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, जुमा के दिन वो बेलोस तकू की हालत में नजर आना पसंद करते हैं। नमाज की टोपी पहने और सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस वो एक एक करके अपनी चमकदार नई SUV से बाहर निकलते हैं और DHA की एक मस्जिद में दाखिल होते हैं। मुहज़्ज़िब मुआशरों में अशराफिया साइंसी और तालीमी मामलात से लुत्फ़ अंदोज़ होती है। वो यूनिवर्सिटियों को कुर्सियां और प्रोफेसरशिप देते हैं। उनके नाम रखने वाले इदारे अतिया दहिंदगान को अमर कर देते हैं। JRD टाटा के नाम से मंसूब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हिंदुस्तानी साइंस का काबिल फ़ख्र फ्लैगशिप है। लेकिन अब किसी ऐसे शख्स की तलाश में पूरे पाकिस्तान का जायजा ले सकते हैं जो साइंस और फ़नून लतीफ़ा के लिए अतियात दे। जहां तक मौसीकी का ताल्लुक है, मेहदी हसन मरहूम और गुलाम अली जैसे मशहूर पाकिस्तानी गज़ल गुलकारों को पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में पजीराई मिली। पाकिस्तान में इंसान दोस्ती का मतलब मदारिस, मसाजिद और हस्पतालों को अतियात देना है। शॉटगन से उड़ाने के बजाय आइए समझ ले कि तमाम अमीर लोग एक ही वजह से अमीर नहीं हैं। कुछ दिमागी ताकत और सख्त मेहनत की वजह से अमीर हैं। दूसरे लोग अमीर हैं क्योंकि वो ठग, जमीन पर कब्जा करने वाले, हीरा फेरी करने वाले और किराया लेने वाले हैं। फोर्ब्स 2023 ने 5 अमीर तरीन अमरीकियों की शनाख्त की है। जेफ बीजोस, अमेज़न, एल्विन मस्क, टेस्ला, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, लीरी एलिसन, ओरेकल और मार्क ज़करबर्ग, मीटा। उनकी तख्लीकात ने आपके तर्ज ज़िंदगी और मेरे तर्ज ज़िंदगी को बदल दिया है। अगरचे अमीर हिंदुस्तानी ज़्यादा जिद्दत तराज नहीं है, लेकिन वो भी काफ़ी तकनीकी हैं। फोर्ब्स ने 5 अमीर तरीन अफराद की शनाख्त गौतम एडनी, बिजली की पैदावार, मुकेश अंबानी, पेट्रोकेमिकल, शिव नादिर, IT, साइरस पूनावाला, वैक्सीन और राधा किशन दमनी, रिटेल के तौर पर की है।
फोर्ब्स की फहरिस्त में कोई अमीर तरीन पाकिस्तानी शामिल नहीं है, लेकिन मुबैना तौर पर 5 अमीर तरीन अफराद मियां मंशा, सदर उल दीन हाशवानी, आसिफ अली जरदारी, मलिक रियाज और हबीब अल्लाह खान हैं। उन्होंने अपने अरबों कैसे कमाए ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या बरामदी अशिया तैयार की है? क्या पाकिस्तान हमेशा डॉलर कमाने के लिए बेडलाइन, अंडरवेयर और फुटबॉल पर इन्हिसार करेगा? जैसे जैसे ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते जा रहे हैं, हर कोई ये कहावत सुनता है कि कम दरामद करें और ज़्यादा बरामद करें। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मैक्रो इकोनॉमिक जोड़ तोड़ ठीक नहीं कर सकती। पीडीएम और पीटीआई के नुक्ता नज़र में से इंतखाब टोडलडम बमुकाबला टोडल का है। मैक्स वेबर के ज़माने के माहिरीन समाजियात ने यह साबित किया है कि दौलत की पैदावार का बड़ा रास्त ताल्लुक अक़दार, सकाफत और आलमी नुक्ता नज़र से है। जाहिर है कि पाकिस्तान में अहम तब्दीली नस्ली तौर पर होनी चाहिए। ईमानदाराना मेहनत, आला सतह की महारत, कानून की पासदारी करने वाले शहरियों का कल्चर उंगली ओहे से नहीं बनाया जा सकता। किस किस्म के रवैये, सकाफती और नज़रियाती तब्दीलियों की ज़रूरत है? सबसे पहले हमारे स्कूल के बच्चों को ज़बरदस्ती फजूल बातें खिलाना बंद करें। जो चीज़ ले तालीम के तहत जाती है वो दरअसल मजहबी और प्रोपेगेंडा पर मबनी तालीम है। इसका नतीजा बड़े पैमाने पर बेवकूफ़ी और सोमालिया की सतह पर सीखने के नताइज हैं। अकेले हुकूमत को मोरिद इल्ज़ाम न ठहराया जाए, पूरे मुआशरे की गलती है। मिट्टी भर मुस्तस्नियात के अलावा हमारी यूनिवर्सिटियां कूड़ा क्रिकेट हैं। मुकम्मल मुद्दत मुलाजमत के हामिल प्रोफेसरों में से निस्फ सिर्फ टैक्सी चलाने के लिए मौजू हैं। ऐसे दानिशवराना रेगिस्तानों में तालिब इल्म सिर्फ ग्रेड और डिग्री का मुतालबा करते हैं। ज़्यादातर वाइस चांसलर्स, डीन्स और चेयरपर्सन्स का शुमार ज़्यादा से ज़्यादा नीम तालीम याफ्ता अफराद में होता है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के मसाइल के लिए दुनिया को मोरिद इल्ज़ाम ठहराना बंद किया जाए। आप मगरिब से नफरत नहीं कर सकते और उसके साथ ही उसे बेल आउट के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते या इमिग्रेशन के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते। हम खुद अपनी बदकिस्मती के मुसन्निफ हैं। पाकिस्तान की मदद के बगैर तालिबान का इफरीत और दहशतगर्दी का वजूद ही ना होता। ये सच है कि सोवियत यूनियन के साथ जंग में अमरीकियों ने हमारा गलत इस्तेमाल किया, लेकिन क्या हमने अमरीकी गाय को इस वक्त तक दूध नहीं दिया जब तक कि इसके गधे डॉलर से खुश्क ना हो जाएं? काबुल में जुनूनी कुव्वतों को कायम करने और कश्मीर को आज़ाद कराने के मकसद से जिहादी तंजीमों का मुठभेड़ नेटवर्क किसने बनाया? लेकिन FATF के लिए हाफिज सईद जेल में अपनी टांगें ठंडा करने के बजाय अब भी पाकिस्तान के गिर्द घूम रहे होंगे। आबोहवा की तब्दीली यकीनन हमारी गलती नहीं है। दूसरे लोग कार्बन डाइऑक्साइड उगलते हैं, लेकिन गरीब सिंधी और बलोच किसान उसकी कीमत अदा करते हैं। उनके हक में बात करने का बहाना करते हुए हमारी शिकारी सियासी अशराफिया एक मुतवक्के इनाम का जश्न मनाती है। COP 27 में उनकी सिफारती मुहिम ने जुर्म के बोझ तले दबे मगरिब से अरबों डॉलर के वादे हासिल किए, लेकिन आबोहवा की तलाफी से कौन फायदा उठाएगा? सैलाब से पहले, दौरान और बाद में हजारों लग्जरी SUV दरामद की गई। बरतानवी हुकूमत के पास तमाम वजारतों और महकमों के लिए 45 गाड़ियों का पूल है, जबकि सिर्फ सिंध के पास 25,000 सरकारी गाड़ियां हैं जिनमें पेट्रोल कोटा है। तीसरी बात यह है कि सिक्योरिटी स्टेट बनना बंद कर दिया जाए। पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ साथ अपने साथ भी पुरअमन जिंदगी गुजारने से कासिर है। यह हैरत की बात नहीं है। 1990 की दहाई में वफाकी कौमी निसाब में छठी जमात के बच्चों को पाकिस्तान के खिलाफ भारत के नापाक अज़ाइम के बारे में जानने और जिहाद और शहादत पर तकारीर करने की ज़रूरत थी। कातिल TTP पाकिस्तानियों के एक बड़े हिस्से के लिए इतनी पुरकशिश क्यों है, ये देखना मुश्किल नहीं है। नोट करें कि इन दिनों LOC कितनी खामोश है और हिंदुस्तानी रहनुमाओं की जानिब से गैर मामूली तौर पर कम सतह की तनखीद की गई है। उनके नुक्ता नज़र से मज़ा क्यों खराब करें? बस इंतज़ार करो और देखो, क्योंकि कशिश शक्ल का नाकाबिल मुआफ़ी गैर अखलाकी कानून खुद को साबित करता है। पाकिस्तान को तबाही के लिए किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। इसकी सिविल और मिलिट्री अशराफिया ने अपने ही घर को खोखला कर दिया है। मज़मून निगार इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तबीयात दान और मुसन्निफ़ हैं।
अखज़ शदा बतारीख 28 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.